happy morning to all my dear children. Welcome back to your computer class. Today in your first chapter, that is computer and electronic device, that is part 3, we will learn about the last topic of your chapter, that is starting and shutting down a computer. हम लोग सीखेंगे how to switch on the computer and how to switch off the computer. But first we will learn only the 3 points which were remaining in our previous video lesson, that is the disadvantages of computer. Only these 3 points were remaining. The first one is the unemployment. Now as you all know, technology change होती है. Okay, first हम लोग कीपैड वाले phones यूज़ करते थे, then we were कॉटी कीपैड्स हम लोगों ने फ़ोन यूज़ किए, then we switched on to smartphones. तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो जो लोग वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनके पास काम नहीं होगा करने को, दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब्स टू डू वर्क, सो दैट विल बी नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, अगर हम लोग लर्न नहीं करेंगे वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, देन वी विल बी अनएम्प्लॉयड, वी आर नॉट हैविंग एनी जॉब. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज्ड मैन पावर कॉस्ट. नाउ जैसे कि मैम आपको ये पढ़ा रही है कंप्यूटर. ओके, नाउ मैम इज़ वेरी एजुकेटेड, ठीक है, मैम को आता है ये कैसे पढ़ाना है. ओके, तो कोई भी कब तब पढ़ा पाएगा जब वो इतना स्किल्ड पर्सन हो, उस फील्ड में वो इतना एजुकेटेड हो. तो इसीलिए वी से दैट इंक्रीज मैन पावर कॉस्ट, बिकॉज अगर कंप्यूटर ऑपरेट करना है, सो अ पर्सन शुड हैव ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू द कंप्यूटर. अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगी, ही कांट ऑपरेट द computer. And the last one is the lack of emotion. As you all know, computer does not know how to smile and how to cry. इसीलिए he has a lack of feelings. Computer is having a lack of all the feelings. That's why it is a disadvantage of the computer. Now, moving on to the next, our topic, starting a computer. Now, for starting a computer, what we need, computer को run करने के लिए, which is the most important thing, we have studied on page number 1 in your chapter. What we need to run the computer? We need electricity to run. So what we will do? First we will switch on the power supply, then we will switch on the UPS. See here, it is the power button of the UPS. We will switch on the UPS. Then we will switch on the CPU. Here is also a power button. We will switch on the CPU. Then switch on the monitor. Now on the monitor, here is also a power button. We will switch on the monitor. Now I will read the steps for you. First, we will switch on the power supply, switch on the UPS, switch on the power button on the CPU cabinet as I have shown you. Then switch on the monitor. Okay, then after switching on the monitor, a lock screen appears. This type of lock screen appears when we switch on the monitor. ये वाली lock screen आ जाएगी आपके monitor पे display होगी जब हम monitor switch on करेंगे. Okay, click on a blank area of the screen or press any key on the keyboard. हम कहीं पे भी click कर लें और we can press any key on the keyboard. Then after a sign in screen appears here, this type of screen will appear. पहले ये वाली screen display होगी, फिर हम जब click करेंगे then we will see this type of screen. It is known as sign in screen. Okay, then type the password or pin and press the enter key. We have to type the password here and then we have to type the enter key. Okay, a screen called the desktop appears. You can see small pictures on it. These are called icons. Now a screen like this appears. कौन सी screen है ये? Desktop. Desktop, and these all are known as icons. These all are known as icons. Understood? Recycle bin, Google Chrome, Mozilla Firefox, these all are known as icons. Understood? Then shutting down a computer. Now you all know, हम लोगों ने सीख लिया कि switch on कैसे करना है. First we will switch on the power supply, then UPS,
then CPU cabinet, then monitor, then a lock screen appears, फिर उसके बाद साइन इन स्क्रीन आएगी, देन हमारा डेस्कटॉप आएगा. ओके, नाउ हाउ वी विल स्विच ऑफ द कंप्यूटर. जब हमको कंप्यूटर शट डाउन करना हो, हाउ वी विल डू दैट? क्लिक द स्टार्ट बटन. दिस इज द स्टार्ट बटन ऑन द डेस्कटॉप. ये आपको स्टार्ट बटन दिखेगा डेस्कटॉप पे. जब आप आपका मॉनिटर ऑन होगा, यू विल सी अ स्टार्ट बटन लाइक दिस. ओके, क्लिक द पावर बटन. This is the power button, step number 2. Then 3 options appear. Click the shutdown option. In the few seconds the monitor turns black. See, 3 options are there: restart, shutdown and sleep. हमको किस पे क्लिक करना है? शटडाउन पे. Why? Because we have to shut down the computer. हमको switch off करना है कंप्यूटर. First, click on the power button, click on the Windows icon, then power button, and then the shutdown. Okay, switch off the power button on the monitor. Now, after following these 3 steps, हमको क्या करना है? We have to switch off the power button. जहाँ से हमने power button on किया था, in the same way we will switch off the power button on the monitor. Then switch off the UPS, and last switch off the power supply. Understood? Is it clear to you, students? Okay, the next and the last one is the booting. Now what is booting? When you switch on the computer, the operating system gets loaded into the computer memory automatically. जब हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, वो क्या हो जाता है? लोड हो जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में. एंड द फर्स्ट स्क्रीन कॉल्ड डेस्कटॉप अपीयर्स. जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो कौन सी स्क्रीन आती है? डेस्कटॉप आती है, जिसमें आइकन्स होते हैं. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग. जब हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी लोड होना स्टार्ट कर देती है एंड अ स्क्रीन डेस्कटॉप अपीयर्स. ओके, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज बूटिंग. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज द चैप्टर क्लियर टू यू? Now worksheet time. You have to refer page number 14 in your textbook. Okay, there is a worksheet in your textbook. You have to do it in your textbook only. Sort the list given below as applicable to human and computer and relist in the spaces given below. You have to write down the list of computer and human. Like makes mistakes. Who make mistakes? Computer करता है कि human करता है? You have to find out. Then thinks logically. Who does that? Computer or human? You have to list down one by one in both these columns. The next one is the color the keys that form the name of a very useful smart machine. Choose any color of your choice. Fill in the blanks, keys given below and also color them. You have to color it. और आपको क्या करना है? ये आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं. डैश इज अ मैन मेड मशीन. ये आपको बॉक्सेस फिल करने हैं. इसमें से वर्ड्स उठाने हैं, लेटर्स उठाने हैं एंड उसमें आपको फिल करने हैं. देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कलर इट. इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? So our chapter number 1 is over. We will meet with the new chapter in our next video lesson. Till that, I will send you the notes of this chapter. You have to write down in your notebooks in a very good handwriting. Okay, students? Till then, bye-bye. God bless you. Stay safe, stay happy.